वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कहीं और से। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन टू गोवा विद माई फैमिली। और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे हैं और हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। हमारी बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आवर फ्लाइट इज़ अराउंड 1 PM। तो अभी हम जस्ट बैठे हैं, हमने चेक इन वगैरह कर लिया है एंड आई एम टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग विद मी ऑन दिस ट्रिप। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। We've reached Goa and it's 5:30 right now. हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी अराउंड 3:30 और 4 और एयरपोर्ट से हमारे रिजॉर्ट तक आने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया एंड इट्स वेरी नियर टू बागा बीच। तो अभी हम चेक इन कर रहे हैं एंड उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होके थोड़ी पेट पूजा करके हम शायद बागा बीच पे निकलेंगे, जो कि हमारे रिजॉर्ट से इट्स जस्ट 5 मिनट्स अवे, कैलंगूट और बागा बीच दोनों। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर रिजॉर्ट एंड यहाँ से अंदर जाएंगे तो वहाँ रिजॉर्ट का रिसेप्शन है एंड अंदर जाके अलग अलग हट्स बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी चेक इन कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमें कौन से हट्स और विलास मिले हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ लेक जो सारे हट्स के बीच में से जाती है। सो आई विल गिव यू गाइज अ क्विक रूम टूर और उसके आसपास की सराउंडिंग्स का। सो दिस इज़ द प्राइवेट गार्डन। हमारे हट के बाहर जो है ये पूरा हमारा एरिया है एंड ऐसे हर हट के साथ अपना एक सेपरेट एरिया है। देन यहाँ पे बैठने की जगह है बाहर एंड देन वी ओपन दिस एंड दिस इज़ आवर प्रिटी हट। यहाँ पर बहुत सिंपल, बहुत प्लेन सी, बहुत सुंदर सा लग रहा है और बेड बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर भी बैठने की कुछ चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ लैम्प है एंड वी हैव अ विंडो एंड सम यूजुअल थिंग्स। देन लेट्स लुक एट द वॉशरूम। ओके, वॉशरूम इज़ प्रिटी मच नाइस एंड हाय, दिस इज़ मी। Got back to a resort after having dinner and right now I'm just having my green tea, my own time, just roaming around in the garden and it's almost 12 AM and मैं just try कर रही हूँ मैं जितना enjoy कर सकती हूँ इस trip को, like every bit of it. So today's vlog ends here. I hope you liked it and if you did, give it a big thumbs up and please subscribe to my channel. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye, take care.